A very good morning to all of you. Let's start the chapter 5, Mother's Day, from the book Snapshot. And today we'll start the chapter from page number 39. And in previous lines, we have read that here Mrs. Pearson's son, Cyril, he enters in the room. So what's the situation now? Let's read. Cyril briskly, hello mom, tea ready. Mrs. Pearson, no. Cyril जो है वो तेज़ी से अंदर आता है and he asked her mother, if tea is ready. Then Mrs. Pearson is giving reply, no, tea is not ready. Cyril, moving to the table, annoyed, why not? Then Cyril asks her mother, and he looks very annoyed and he's asking her mother, why not tea is ready? Mrs. Pearson, coolly, I could not bother. Mrs. Pearson जो है वो थोड़ा सा शांत स्वभाव से जवाब देती है and she is saying that because I don't want to bother myself or I don't want to, मैं परेशान नहीं होना चाहती थी. सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग. सिरिल अपनी मदर से पूछता है, आर यू फीलिंग लो और यू आर फीलिंग सिक? मिसेस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ. मिसेस पियर्सन कहती हैं, इससे ज़्यादा अच्छा मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं करा. सिरिल अग्रेसिवली, व्हाट्स द आइडिया देन? सिरिल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड ही इज़ just asking her mother, then what do you mean? What's the idea then means? What do you mean? Mrs. Pearson, just a change. Mrs. Pearson reply देती हैं, my idea is or my I'm saying it to you that I need a change. Cyril briskly, well, snap out of it, ma, and get cracking. Haven't too much time. Cyril अपनी mother से कहता है, then please mother, आप जल्दी करिए and आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है. प्लीज़ गेट रेडी ऑल द थिंग्स फॉर मी. सिरिल इज़ अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम. सिरिल जो है कहीं जाने वाला है. मिसेस पियर्सन जो है जब तक अपनी आवाज़ चेक कर रही हैं. मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. मिसेस पियर्सन रिप्लाई करती हैं, माई डियर सन, मेरे पास बहुत टाइम है. आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम. सिरिल, येस बट आई हैवंट गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट. बट सिरिल इज़ गिविंग रिप्लाई, मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी आज रात को मैं बहुत बिजी हूँ. मूविंग लेफ्ट टू द डोर, और वो लेफ्ट डोर से चला जाता है. डिड यू पुट माई थिंग्स आउट? लेफ्ट से जाते जाते वो पूछता है कि आपने मेरी चीज़ें बाहर निकाल के रखी है? मिसिस पियर्सन कूली, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट. शी इज़ गिविंग रिप्लाई इन अ वेरी कूल मैनर एज शी इज सेइंग, son, I don't remember about all those things, so I forgot. Cyril, moving to the table, protesting, now look, when I asked you this morning, you promised, you said you have to look through them first in case there was any mending. Then Cyril जो है वो वापस आता है एंड इन अ वेरी प्रोटेस्टिंग मैनर ही आस्क्ड हर मदर, लुक मदर, in the morning you told me that you will ready all the things for me and you promised that, and this time you have and you said that you have to look through them, कि आप सारी चीज़ों को देखेंगे and after that if there is any need of mending those things then you can mend or you can repair those things. Mending here means repairing. So Mrs. Pearson, yes, well, now I have decided I don't like mending. Then Mrs. Pearson is giving reply, my dear son, but I have decided now that मुझे mending or repairing पसंद नहीं है. That's why I'm not going to do that work for you. Cyril, that's a nice way to talk. What would happen if we all talked like that? Then Cyril is saying to her mother that, mother, this is not the way to talk with your children. अगर हम सब भी आपसे ऐसे ही बात करें then what would happen? Mrs. Pearson, you all do talk like that. If there is something at home you don't want to do, you don't do it. If it is something at your work, you get the union to bar it. Now, all that's happened is that I have joined the movement. Here, Mrs. Pearson is giving reply that you all do talk like that. तुम सभी लोग इसी तरीके की बातें करते हो. If there is something at home you don't want to do, but अगर घर पे कुछ करने की बात हो, that you all don't want to do that, तुम लोग नहीं करना चाहते हो, and you don't do it, और तुम इसे करते भी नहीं हो. It's something at your work, and if something about your job or your work you get
द यूनियन टू बार इट, तब तुम उस काम को के लिए यूनियन बना लेते हो और उस काम को करते हो. नाउ ऑल दैट हैपेंड इज आई हैव जॉइन द मूवमेंट एंड द थिंग इज दैट आई एम इन अ मूवमेंट. मैं एक मूवमेंट या एक आंदोलन में हूँ जिसमें आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. सिरिल, मिसेस पियर्सन, Cyril is looking some kind of staggered. I don't get this, mom. What's going on? Here, Cyril कहता है मैम, वो थोड़ा सा shocked हो जाता है and he's saying that I don't get, mom. What are you saying? Mrs. Pearson. She is in an alonic and sinister changes. वो थोड़ा सा डरावने और बहुत ज़्यादा तेज़ अंदाज में बोलती हैं. She changed her voice. Doris entered left. She is in the process of dressing and is now wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. Then Cyril की जो sister है, Mrs. Pearson's daughter, Doris Pearson, she again enters in the same room and इतनी देर वो अपने शी इज़ बिजी इन हर प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग हर सेल्फ एंड नाउ शी इज़ वियरिंग अ रैप एंड नाउ शी इज़ वियरिंग अ काइंड ऑफ अ shawl. So she looks pale and red-eyed because she cried a lot. That's why her eyes look a bit pale and she looks a red-eyed person. Mrs. Pearson, you look terrible. I would not wear that face even for Charlie Spence. So Mrs. Pearson is talking to her daughter and she's saying that तुम बहुत ज़्यादा terrible लग रही हो. You look horrible and I would not wear that face even for Charlie Spence. और मैं इस तरीके की चेहरा बनाकर Charlie Spence के लिए कभी नहीं चाहती. Doris, moving above the table angrily, oh shut up about Charlie Spence and anyhow I am not ready yet, just dressing. Then Doris, she is giving reply to her mother and this is the rude way of replying that, and she is very angry with her mother. That is why she is saying, oh shut up mother, don't say any single word about that boy Charlie Spence and anyhow I am not ready yet. और मैं आपको ये बता दूँ that I am only dressed up, I haven't ready yet properly. So and if I do look and जो मैं ऐसी लग रही हूँ it's because of you. So she is saying to her mother, terrible, it's your fault, you made me cry. So here Doris Pearson is blaming her mother that mother, I'm looking like that only because of you, because you are the one who made me cry. So here she speaks despairingly of Doris' date with Charlie Spence and Doris is amazed and started crying. And after that Cyril Pearson जो है वो आते हैं अंदर and he is like talking to her mother about the tea in the whole incident. Now let's start. Cyril, curious why, what did she do? Cyril थोड़ा सा curious होता है and he wants to know that what Doris ने ऐसा क्या करा है. That's why you are saying all these things about her. Doris, never you mind. Please don't worry about brother. Mrs. Pearson, rising and preparing to move to the kitchen. Have we any stout left? I can't remember. Mrs. Pearson जो है उठती हैं और रसोई की तरफ जाने लगती हैं. And she is asking about a stout left. Here stout is a kind of a liquor. So she is asking for that and I can't remember. And she is saying that मुझे याद नहीं आ रहा where I kept that bottle of liquor. Bottle or two, Cyril, bottle or two, I think, but you don't want stout now. So, Cyril जो है वो कह रहा है कि एक या दो बोतल रखी होंगी बट आपको स्टाउट और बियर की बॉटल क्यों चाहिए. मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट, आई डू. मिसेस पियर्सन इज गिविंग रिप्लाई और लेफ्ट की तरफ जाते हुए बोलती है येस आई वॉन्ट दैट. सिरिल, वॉट फॉर, किस लिए चाहिए. मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, टू ड्रिंक यू क्लॉट. Yeah, Mrs. Pearson is saying that पीने के लिए चाहिए. You clot means you donkey.
Mrs. Pearson exists right. Instantly, Cyril and Doris are in a huddle, loose together at left center, rapidly whispering. So मिसेस पियर्सन जो है दाईं तरफ से बाहर चली जाती हैं, एंड आफ्टर दैट डोरिस और सिरिल दोनों आपस में बातें करते हैं, एंड they are talking in a very low sound, that is means whispering sound. Doris, has she been like that with you too? Doris अपने ब्रदर से पूछती है that she is behaving same with you, Cyril. Cyril, yes, no tea ready, could not care less. सिरिल कहता है यस, उन्होंने मेरे लिए कोई चाय नहीं बनाकर रखी, एंड शी इज़ नॉट bothering about me, or she is not caring too much about me. Doris, well, I am glad it's both of us. I thought I do done something wrong. तो डॉरिस कहती है ओके, मुझे अच्छा लग रहा है ये जान के दैट मेरी अपनी मदर जो है उन्होंने सेम बिहेवियर रखा है दोनों से, अदरवाइज उसे इतनी देर से यही लग रहा था डॉरिस को दैट उसने कोई गलती कर दी है, दैट्स वाई मिसेस पियर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दैट. सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स. सिरिल कहता है मुझे भी ऐसे ही लग रहा था दैट आई डिड सम मिस्टेक, बट हमारी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है. डॉरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज. डॉरिस अपने ब्रदर को कहती है दैट शी इज़ नॉट बिलीविंग फॉर अ मोमेंट दैट हर मदर इज स्मोकिंग एंड प्लेइंग विथ cards. Cyril, I asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. तो डॉरिस कहता है मैंने अपनी मदर से पूछा था that if she is off color means she is feeling sick or ill. Then उसकी मदर ने रिप्लाई दिया कि वो उनकी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं है. डॉरिस, वेल शी सेड सडनली ऑल डिफरेंट एंड दैट्स what made me cry. It was not what she said, but the way she said it and the way she looked. Then Doris is saying कि उसकी मदर जो है शी इज़ सडनली ऑल डिफरेंट, वो कुछ ज़्यादा ही बदल गई हैं, दैट्स वॉट मेड मी क्राई, इसीलिए डॉरिस को रोना आया. इट वॉज नॉट वॉट शी सेड बट द वे शी सेड. डॉरिस कह रही है मुझे उसका बुरा नहीं लगा कि उन्होंने क्या कहा, बट हाउ शी or her way of talking is very rude, as and the way she looked, and उनके देखने का नज़रिया ही बदल गया है. Cyril, have not noticed that she looks just the same to me. Cyril कहता है कि मैंने ये सब कुछ नोटिस नहीं करा, बट वो मुझे सेम ही लग रही हैं अकॉर्डिंग टू हर अपीयरेंस. Doris, she doesn't to me. Do you think she could have hit her head or something, you know? Then Doris is saying to her brother that तुम्हें नहीं लगता उनके सर में कोई चोट आ गई, और she is suffering from illness or what? And got what is it, you know? क्या तुम्हें पता है क्या हुआ है? Cyril staggered. Do you mean she is balmy? So Cyril is asking with her sister Doris that do you mean she is balmy? Balmy here means क्या वो सठिया गई हैं? Doris, no, you feathead, you know concussions she might have. Then डॉरिस अपने भाई से कहते हैं शी इज़ feathead मीन्स उन्हें शायद कोई दौरा पड़ा है, दैट्स वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट. Cyril sounds far-fetched. Cyril saying that these all things look like far-fetched here means when they are talking to each other, Cyril thinks that it is all impossible with her mother, that if she is sick or she is a balmy lady or she is having some kind of उनको कोई दौरे आ रहे हों और like that. Doris, well, she is far-fetched. If you ask me, she suddenly begins to giggle. Here Doris is saying that her mother looks like impossible for them, and if you ask me, she suddenly begins to giggle. और अगर थोड़ा सा वो ऐसा करता है कि थोड़ा सा हंसने लगता है डॉरिस जो है थोड़ा हंसने लगती है. नाउ देन व्हाट इज़ इट, और डॉरिस पूछती है अब क्या करना चाहिए. Cyril is saying what is it? Doris, if she is going to be like this when dad comes home. डॉरिस कहती है अगर डैड घर आएंगे एंड इफ़ शी इज़ बिहेविंग लाइक इन द सेम मैनर एंड दे
आर हैविंग सम काइंड ऑफ, और वो थोड़ा हंसने लगती है. सिरिल बिगिनिंग टू गुफॉ, आई एम सेइंग इन फॉर. सिरिल जो है थोड़ा ज़ोर से हंसने लगता है. एंड ही इज सेइंग आई एम स्टेइंग इन फॉर, और अब मैं यहीं रुकने वाला हूँ.